So, hello everyone. I'm Renu from the Vegas team, and I would like to welcome you all, students, teachers, and parents, to our to today's Coffee with Counseling session on 10 habits for a healthy life. So, we all have habits for something doing in our life, but living a healthy life is the basic need of our life. So, in today's session with our mentor, we will going to learn about the habits that we can approach for living a healthy life. So also I would like to welcome our Facebook audience as we are live on Facebook. So to our Facebook audience, if you guys have any question, you can type that questions in the live in the comment box so that we can take your questions. And moving ahead, I would like to welcome our counselors for the session. Dr. Madhumati Singh. Dr. Madhumati Singh is working for a holistic approach to child welfare. She has the difficult job of trying to help young parents interrupt the word to into their words and actions for their children's betterment and to get insights into the mental and psychologist and skill makeup. The job she is doing will tell you requires a bandwidth larger than one afforded by a titless training in a clinical psychology. Dr. Madhumati Singh is also a director at Vegas. So, ma'am, I am very happy to have you here. Now, moving on ahead, I would like to welcome our school counselor, Miss Manpreet Kaur Sodhi. Manpreet Kaur Sodhi is a school counselor at Jammu Sanskriti School. She has done MA in psychology. Ma'am, I am very happy to have you here. I would like to request you all to kindly mute yourself, and ma'am, I request you both to take over the session. Thank you. Thank you, Renu. A wonderful way to begin our evening. It's a vibrant, wonderful October day, and Navratras are on. So we are looking at a lot of not only the body detoxing, but also the mind detoxing, a bit of spiritual flavors in our life. And Fair Gaze, the largest portal for the K-12 community, has once again brought to all of us viewers out there. Today being the topic that 10 healthy habits for a healthy mind. And we have, of course, also in the panel, Manpreet, who's joined us, who is going to be also discussing, talking, we'll be sharing ideas. And we are also looking forward to the audience being very interactive. Put in your questions in the chat box, and we would love to take up the questions, queries, comments in the later part of our webinar, that is the last 15 minutes. So to begin with, guys, as you've been knowing, my name is Madhumati Singh, and yes, Fair Gaze does keep the child in the center. The child is the universe, and the two links are the home community and the school community. So we try and bind them together to give an optimal kind of life growth for our child. So welcome you all, the viewers out there, and let's keep this as interactive as possible. So I was wondering, when I was looking at the topic, 10 healthy habits for a healthy mind, a lot of talk is going on. I said, what is the one word which stands out in this particular topic? One word. So I was thinking, okay, healthy mind, okay, 10, there could be 20. Why only 10? There's one word which stood out, and that is the word habit. Why did this word habit stand out? Is that habit is something which we inculcate. The more we practice something, the more it becomes our habit. As per research, if we do something 7 times, we become habituated to it. So that's why the word habit came to my mind. It's not something that we are conditioned in the beginning. We recondition, we are able to change our habits. We are able to alter our habits. And habits is what make our life. A person who is having healthy habits is what our today's topic is. What are the habits which are healthful for a healthy mind? So the first word came to mind, that was the habit part, but the other was the mind. I look at the head as the headquarters, the brain, the head. This is the machine which is taking
charge of the rest of the body. When the mind is healthy, even the body will commensurate with that. Our entire system, be it all our digestive systems, the neurosystems, the various, the bodily stuff that we are made of, is all conducted by the head. There are healthy people who are healthy, they don't feel healthy. So they go to the tests and get their tests done saying that I'm having, these aches and pains. So the tests, the MRIs and your scans does not show anything. So they say, oh, it looks like a psychosomatic. That means a psychological state of mind which is giving rise to a particular physical pain or a physical symptom. So thus comes the whole idea of the mind being healthful. Once like I believe in the saying, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. People with disabilities, we have a lot of examples. We are inspired by a lot of people who, in spite and despite difficulties and shortcomings, are able to succeed. Nick Bujuchi, for example, I'm sure you've seen him on YouTube, you've heard about him. There are very many inspirational stuff that. So what happens? How do they become successful? Or how do the mind becomes, something which works in our favor? So I was just thinking, I said, there's something which I have been repeating in our webinars, Renu, I'm sure you'll be able to relate to it also. There's something like repetitive, we've said, more like, almost like wanting to help the students inculcate this particular thing, what I'm going to say. The first point is, if you are just keeping these 5 elements in your life as stable, consistent, 5 elements, you are a healthy, contentful, a person with content. 5. And we've spoken about it, and we've done a lot of parenting workshops. So we've not only told the kids, but we've also spoken to the parents to help the children get these 5 elements stabilized in their life as early as possible. And rest of it is very easy to handle. Now, what are those 5 things? I'm again going to go over them. We've done it before. So the first one is your waking up time. Second is your work time, study time. Stable, sustainable, stable. Keep it stable. Waking up time, your study time, work time, and this also applies to adults, by the way, because these kids become teenagers and then they become young adults. If you have these 5 elements, you will be able to continue and be sustained in your life. So coming back to wake up time, study time, meal time, all the meal times. The 4th one is leisure exercise time. And the 5th one, any guesses, Bill? It's your class. 5th. It starts with wake up, it ends with sleep time. Yes, ma'am. The sleeping time. Yes, I think Rohini did mention that. Rohini, welcome. Good to have you here. So yes, sleep time. Just these 5 elements make up a person's day more disciplined. You are able to get more output. You are able to be less stressful because you have learned, it's a learned behavior. You have learned to discipline the time. You have owned up that time. 5 factors which make up, like I said, the first good habit to have a healthy mind. The second one is communication. Have you seen children? How children are when they're small? The toddlers. Yes, Manpreet. I mean, I hope we are all together in this. So I said yes. So what we were talking about is that, have you noticed children? Yeah, we've noticed children. What happens with them is children are very communicative. They're very curious. They will ask you questions. They will. It's us adults at some stage of the child's life that we condition them to speak less, to not speak their minds, to say, no, you're not allowed to have your ideas. And somewhere we kind of completely stop. We stall the basic
communication that a kid has in her environment, his or her environment. So communication is the second thing. I know, like I said, this particular webinar is just not for the K-12 in terms of kids. We're looking at three stakeholders. We're looking at the kids community, we're looking at the parents community, we're looking at the teachers community. We all have to follow the rules, and then only we will have positive outcome. So helping encourage effective, more open communication with our children is the second part of having a healthy mind. The third one, and this all may not be going in that priority. For me, the first point is most important. The rest of it are random. The third is a lot of kids are, they all have hobbies, interests. They love doing a lot of things. As they go into middle school, senior school, a lot of things are shed away, reluctantly taken away from them. And there are kids who definitely, let's say they get into IIT or become a doctor and they do their competitive exams. Later on in life, somebody asks them that, what do you do? What are your hobbies? They say, oh, nothing. I just work. I work and I used to have hobbies. So we go back. Okay, can you recall your childhood? What did you enjoy doing? So invariably, there's not a single person I've met who says I didn't do anything. Invariably, they will say that I love painting, or I love singing, or I love an instrument. I love cooking. There are boys who said we love cooking, but we just shoot out of the kitchen. This is not your job, and just study. So the third thing is, we as a K-12 community, the three stakeholders, need to help our kids build hobbies, and within that comes, we need to hone their talent. There are a lot of times kids may not be academically a 90% or getting into competitive exams. Does that mean that they're failures? Which is not true. That's exactly the webinar we had 2 weeks back, that do marks really matter? The whole thing is, it's the holistic development. So please make sure that your kids' hobbies are identified and they are nurtured by you. It is of when the child is happy, the child will invariably study well and do well in life. But if the child is unhappy and the kids, the extracurricular, the co-curricular activities taken away, the child will not be able to perform that well. So building hobbies is very important. In fact, this carries them much more effectively later on in life, because they know what else they like to do besides just getting that money on the table or getting the promotion or building that house, cars, and so on. So building hobbies is very important. The fourth one, I believe, is something which we really need to do. We all do it primary years for the kids. And then we say it's not important. And that is journal writing, creative writing, journal writing. The ability to self-express is part of the point number 2. Journal writing helps in self-expression. It helps in improving the language. It also helps when you write something down, you're actually clarifying thoughts in your own mind. I would suggest there's a book called Conversation with God. The parents out there, the young kids out there, do buy it and read it. In that, there was this guy who is so depressed that he wanted to commit suicide. So he says, before I commit suicide, the next day, I might as well just write down, scribble some ideas. So he says, is there somebody who's there to listen to me? So he calls it God. May not be God really, just the word. And he starts writing. Now, when he starts writing, so there's a question to God. There's a particular question. What is my life made of? Now, his answer is within himself, because he's writing it down. He's not waiting for somebody to tell him that. The answers are his alter ego, which means life is, then he starts defining. This is what I was when I was growing up. This is what life turned out to be. And that's what the book is all about. It's an insight. So journal writing helps in even sorting out your own problems. Of course, there is always a worry of confidentiality. I request the parents to respect their personal space. The parents tend to say, aha, that's your journal, let me read it. No, it's not a good thing. It's not cool. That will also cause the child to stop writing. So please encourage journal writing. And this is very good. The fifth point is very important again. And there's a reason why. Reading as a habit.
Now, a lot of times the word reading is akin to academics. You know, we have to read textbooks. Reading. Reading is cumbersome for some kids. And also we associate it with academics, reading. No, not necessarily. All the kids used to love, the fairy tales and the bedtime stories. Everybody loves them. Mothers would read out to the kid when they're smaller in the play school. What happens later on? Why does the reading as a hobby, as an interest, as a habit not continue forward? You know why? Because the parents and everybody gets into this rat race of getting marks. Of getting marks means leave everything aside, just study. You mug up what you are studying, leading to a lot of stress, leading to children not performing well, leading to a lot of exam phobia, and so on. So reading as a habit, I request everyone, all the parents and teachers out there, make sure that you inculcate reading as a habit. There's also another reason why reading is good. You know, when you read, you also land up reading stuff you want to understand and read and get inspired. So you get inspiration from stuff that you read. And now everything is so much easier. You don't have to buy a book. You can just Google an article on Google itself or YouTube it. So reading is very, very important, where I believe that we get inspired. We also get inspired because we get a better control of language. It also helps us in academics, by the way. So it's a plus, plus, plus every which ways. So do take out time for some reading. A very important part, inculcating humor. Strangely, we ourselves stuff that humor. You know, if a kid is mimicking somebody or is laughing about something, laughing too loud, somewhere we tend to say, I'm not good enough, don't laugh so loud. What's so funny? Have you seen that in a school environment, in a classroom environment? There's something that two kids have said and they're laughing about. And the teacher is the one who will say, stand up, get up. What are you laughing about? It's taken as a punishment. So the other kids who find something funny next time may not laugh in the class. Why? Why do we do that? What's the reason? Is the teacher underconfident that they're laughing on her? Even if they are, I think it's a good thing. The ability to laugh at yourself, the ability to allow laughter, allow that fun in the classroom helps in learning. It also helps in bonding. A popular teacher is one who laughs with the kids, who makes fun, who joins the fun with the kids. So very important to do that. So one of the ways that we've done a webinar on inculcating humor too, where the methods are, do YouTube comedy shows when you have the leisure time. Do some mimicry. Try and make some faces which are very funny. Not all your photographs should be this perfect picture. Do some funny things. Make some memes. Do something silly. It's very important. It's a huge stress buster, and it keeps your mind also light in the head. Sometimes even a serious thing, if we look at it in a funny way, can also take away that blow. Let's say you were scolded in the classroom for something and something happened, right? When you recall that in a funny way. For example, I remember my maths teacher, she pulled my ear, with her nails. I was in 8th standard. I was very bad in maths. I remember. So when I go back later on and my humor is there, so I would narrate to my friends saying, that she tweaked my earlobe so hard that I almost had what would you call that? Uh, uh, as if it was, there was a hole in there. I could wear an earring with it. That was the kind of. So you make it funny. So inculcating humor is very, very important. Please don't dissuade kids. If there's some kids who are natural mimics, uh, please encourage that. And encouraging would help your kid to continue being humorous later in life, because a healthy mind needs that. There's another thing I was thinking, what else makes a healthy mind? Is that if you are involved in your environment, I've noticed that kids who are happier in the classroom, when you look at their profile, academics don't come in the first 2, 3 elements.
They may be good, maybe average. Academics is not the first thing. One of out of the three important things, one of them is that they are always available for things or jobs, helping somebody, assisting somebody, taking up an extra responsibility, running for something to be done, staying a little longer, missing out on interval break, lunch break to help the teacher or to help somebody. So be involved in home and school responsibilities. Now, what that means is this is just school environment, but at home, are the kids really involved with what's happening in their home? Why do we as parents, keep them just stuck in homework, tuitions, sit with your books? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना पढ़ाई करो. क्यों हम करते हैं? Do you know that it brings the self-esteem down of a kid? Somewhere they learn things late, one. Secondly, they feel they're not capable. Maybe they're not capable to be in the kitchen because the mother says you break something and you just mess up with things and just go out. Kids say, maybe I'm not. So let's not do this, guys. Let's make them involved, which means give them responsibilities early on in life. Don't do that when they are in high school. Completely protected kids, who are going to tuitions, taking classes, just taking the exam and going to sleep. The same parents will complain about the kid in high school that this kid, हमारे को help ही नहीं करती है घर पे, she doesn't help or he doesn't help at all. It's you who started it. Why did you do that? Why did you allow? Why did you, put the kid away? Also, I repeat, this is very important for the self-esteem of the kid. The more responsible they are, and it could be little tasks when they are smaller, and it can go on a little longer. Also, it's good for parents because you are not completely hands-on. कि मेरे बगैर तो घर नहीं चलता है. Don't do this. It is not doing good to the kids. Please learn to give duties. Start with little things like, okay, put the garbage, keep your rooms clean. Can you put your cupboards in the right, put your clothes in the right place? Start with little things. Encourage the kid. Don't dismiss when they're doing something and say, "Acha, ye to hona hi tha, ye to karega." Encourage. Notice the stuff that the kid is doing. Motivate and encourage the kid, and she or he will want to be involved in the home activities, and so is the school. That's a very fulfilling experience, and mentally it helps in building self-esteem. That I'm capable of making a sandwich. I'm capable of making a tiffin of my own. I can do up my bed. I can wash my own clothes, my own undergarments and my hankies. I can do it. Imagine a primary school, fifth standard or middle school kids saying that they feel very nice, very happy about that. Helping the mother lay the table, things like that. So there's a lot of stuff that the kid can be involved in at home and at school. A very important part of mind wellness. Another very important part of our overall healthy habits for a healthy mind is prayers. I'm not talking about rituals. I'm not talking about going to the mandir. I'm not making that as a hardlining thing. A prayer, just a prayer of gratitude. Now, so what is that? Do you have a prayer that you can say? No, write your own. What is the journaling all about? The journal we were talking about? Prayer of gratitude. Pehla to hota hai shukrana. You thank God. God or the higher power. Name it anything. Somebody higher than you. It could be even your parents who are in the form of gods, if you are still confused about God as a concept. So prayer of gratitude means the stuff that you have, and you have a lot of things which a lot of people don't have. So a prayer of gratitude, and the other part is equally important. You know what? Miracles. So if you have gratitude, you also are capable of making miracles happen in the same way. So have high dreams for yourself, as high as you like. You want to be the CEO of a company. You want to own an island. You want to have an island in your name. You want to have a chain of restaurants, which is in your name. Or you want to open schools for yourself, or you want to be a minister, or everything is possible. So the gratitude followed by a prayer of miracle, that God help me realize this miracle that I want to get. The more consistent you are, the more
hopeful you are, if you do not have a miracle prayer, things become very bland. Ki pata nahi kal kya hoga. We don't have a vision. That can create distress. And to avoid that, I have another 3-4 minutes and then Manpreet will be taking over. The ninth point is, it's a part of point number 7. I've noticed, again, I'm talking about the profiles of happy kids, happy teenagers, happy young adults, even young adults for that matter. These people, they always learn to do a little more than what they expected. Just a little bit more. For example, a particular role is assigned to a student. And if a student is doing a little bit more than that, that is always noticed. Same thing goes for an employee. If you are assigned a particular job and your seniors, your colleagues notice that you've done a little more than what you are assigned, you will be noticed and acknowledged in time. Don't do it with a motive of getting something back. Do it because you have that capacity to do a little more than what you're assigned to do. People who are successful will always be doing a little bit more than what is assigned to them, and not crib about it. The office time is over. Why is ma'am told me to do this? This one's job. I'm not going to do it. That is not having a healthy mindset. Last but not the least, I completely believe in this phrase, and this is something which has to be part of a habit, a healthy habit to keep your mind healthy, is be an eternal optimist. And the phrase that I use is, this too shall pass. Eternal optimism is very important. Very, very, very important. The moment there is optimism that this too shall pass, difficult times, it's not going to stay forever. This will pass. This is one thing that will always keep the flame of hope alive in you. Like they say, the fire in the belly. Have you heard the phrase, fire in the belly? Yeah. Fire in the belly is somebody who's always up to stuff, upbeat. So keep that fire in the belly alive by being an eternal optimist, because change is the only constant. We all know that everything changes. Neither the good stays. If the good doesn't stay, neither will the bad. True, ma'am. So the important part is be an eternal optimist. So with this, I kind of sum it all up in the sense, these are the 10 points. I hope you've kind of somewhere written them down, registered in your mind. But if you do them on a regular basis, it becomes your second nature. And people who have a healthy mind are very attractive people. People get attracted to them, as bee to honey. They true, just are, they're attracted to them. They are popular. They make friends easily. They're always available, and they are attractive people. So you say, this person, yes, this person who comes to the party, we look forward to this person. Who is that person? Yeah, is the eternal optimist. So keep the optimism on. And with that, I pass on the rest of the talk to Manpreet. Over to you, Manpreet. Thank you so much. Ma'am, before Manpreet ma'am started, I just want to add one thing. Whenever I had a session with you, I get to know so many new things. Like you said that this fell to pass. It motivates me so much. Whenever I had a bad time, I remind your words, and it motivates me so much, and it pushes me towards the positive side of my life. So I'm very grateful for having you with us. So, ma'am, now I would request you to kindly take over the session. Okay. So that was outstanding, ma'am. I mean, I don't have a word to express. So all I just want to say is outstanding, ma'am. Really outstanding. So good evening, everyone. So as you all know that today we have gathered here to talk about 10 good habits for healthy mind. So before that, I really want you people to know what actually mental health is. So because these two things are so much associated with each other, and you should know about that.
So I'm going to start with the mental health and end up with 10 healthy habits for healthy mind. Shall I, ma'am? Okay. So yes, Renu ma'am also told me that we have parents with us today also, and this platform is also for the general public. So I would like to speak in Hindi so that it could be understandable to everyone. So what I'm going to talk about, it will be easy for them to understand. So I'll speak in Hindi. Is it okay with you, ma'am? Okay, fine. Yeah, we are no problem, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. सो मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ है क्यों, हम इस चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट इज रोमिंग अराउंड योर माइंड एंड बी लाइक कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, एंड आज सडनली इस चीज के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, माइंड के ऊपर क्यों बात करें, किसी और चीज के ऊपर भी तो बात कर सकते थे. सो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली 3 एरियाज को स्पेसिफिकली टारगेट करती है. आपका इमोशनल वेलबींग, आपका सोशल वेलबींग और आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग. एंड अगर इन 3 एरियाज में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से या किसी भी एरिया में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ पे असर देती है. आपकी मेंटल हेल्थ मतलब आपकी मानसिक सेहत. सो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए? मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एनकम्पास हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी बिहेव. And all these 3 things comes in a cyclic process. इनमें से किसी एक चीज को भी हार्म होगा, एट द एंड आपके बिहेवियर में जो रिफ्लेक्शन आपका नजर आएगा वो बहुत डिफरेंट होगा. एंड ये जरूर कहना चाहूंगी, वो डिफरेंस से ज्यादा बहुत नेगेटिव होगा. हर किसी के साथ होता है. आज हमारे साथ बहुत स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं. सो उनके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. आप कभी पार्टीज पे जाते हैं और आपको कभी ऐसा फील होता है कि मैं आज अच्छी नहीं लग रही, ये आप अपने बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में मधुमती मैम ने भी बोला था कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो भी बहुत मैटर करता है. जब आप उस तरीके से खुद को लेके चलते हैं, अकॉर्डिंगली आप अच्छा फील नहीं करते. पार्टी हो रही है, सब नाच गा रहे हैं, बट आप एक अकेले पर्सन है जो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे. और उसका रीजन क्या है? आप अपने ही बारे में गलत धारणाएं बना के बैठे हुए हैं. यहाँ पे भी आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है. एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूंगी. नॉर्मली जब हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लोगों को लगता है इधर वी टॉक अबाउट स्किज़ोफ्रेनिक, डिप्रेशन वाले लोगों के साथ बात करेंगे, एमडीडी वालों के बारे में बात करेंगे. सो इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट. बहुत सारे मिथ मेंटल हेल्थ को लेके रिलेटेड है. मेंटल हेल्थ छोटी से लेके बड़ी चीज के बारे में भी है. जैसे आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, तो आपके हार्ट के डॉक्टर के पास भी जाएंगे. इट्स नॉट लाइक कि वो आपकी सर्जरी करने जा रहा है. वैसे ही जब आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है अगर मैं किसी को बोलूंगी कि लिसन मुझे लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है या वो उठा के पत्थर मार देगा आपको. नो, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. एक्चुअली मेंटल हेल्थ का मतलब थोड़ा सा भी तनाव होता है, आपके दिमाग में एक ब्लॉकेज आता है. यू आर नॉट एबल टू मेक योर डिसीजंस प्रॉपरली, you are not able to clear things out clearly. ये चीजें आपके साथ आना शुरू हो जाती हैं. मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है. जितना आजकल के लोग जिम जाना शुरू करे हुए हैं अपनी फिजिक को अच्छा बनाने के लिए, टोन उनको चाहिए अपनी बॉडी, आई गेस आपके ब्रेन को भी उतना टोन नेचर जरूर मिलना चाहिए. क्योंकि दीज डेज वी आर डीलिंग विद सो मच ऑफ स्ट्रेस. बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं हम लोगों के पास. हम लोगों को समझ नहीं आता किस चीज को पिक करे, किस चीज को छोड़े. हम कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ भी जनरेट होती हैं, एसोसिएट होती हैं. मेंटल हेल्थ जब हम लोगों की अच्छी होती है, ये पॉजिटिवली भी इफेक्ट करती है, और अगर सही ना हो ये नेगेटिवली भी इफेक्ट करती है. जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव. अगर आपका मेंटल हेल्थ इज गुड, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा फील करोगे और आपका बिहेवियर भी अच्छा रहेगा. और अगर नहीं अच्छा है तो आप अच्छा फील नहीं करोगे, अच्छा सोचोगे नहीं, और आप एक्ट भी अच्छा नहीं करोगे. आप पूरा दिन चिड़चिड़े रहोगे, किसी से बात करने का आपको मन नहीं करेगा. एंड यू बी लाइक मुझे जरा सा हाथ भी लगा देता है बातों करने में, मैं तो भी चिढ़ जाती हूँ. नॉर्मली ये चीजें होती हैं, और ये छोटी छोटी चीज आगे जाके बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे हम लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत डीपली इफेक्ट होती है. आई थिंक फिजिकल हेल्थ यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगी. जब आप इट्स नॉट लाइक कि मेंटल हेल्थ को आप क्योर नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वो चीज यहाँ पे आती है.
अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई इश्यू है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक 21 डेज का ट्रीटमेंट लेते हैं, डिपेंड कि आपका नेचर क्या है ट्रीटमेंट का। जब आप अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेके इतना कंसर्न दिखाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, और ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, ठीक जरूर होता है, बट आपको चाहिए उसके बारे में बात करना किसी भी चीज को लेके। यू गाइस हैव काउंसलर्स विद यू, आपकी स्कूल्स में काउंसलर है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत तरह के लोग हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। सो ये सब चीजें आपको ब्रीफिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट था, सो दैट कि आपको पता चले कि मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो 10 हेल्दी हैबिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों की मेंटल हेल्थ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, या मैं मेंटल हेल्थ अगर वर्ड ना यूज करके ये भी बोलूं कि अगर आप जब स्ट्रेस होते हो तो आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है उन पे इफेक्ट होता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटीज में बताना चाहूंगी आपका थिंकिंग, आपका रीजनिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका डिसीजन मेकिंग। आप छोड़ सकते हैं कि छोटी सी टर्म में कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, और उनमें से भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आपको नहीं पता कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे जाए। और जब आप अपने फ्रेंड, अपने कलीग से, या अपने पेरेंट्स, अपने एक दूसरे पार्टनर के साथ भी डिस्कस करते हैं, दे बी लाइक यार इतना इजी था इससे बाहर निकलना, मुझे तो पता ही नहीं था। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक ब्लॉकेज आ जाती है। जब भी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक ब्लॉकेज आ जाती है, जिस वजह से हम सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देख सकते हैं, हम पॉजिटिव चीजें नहीं देख पाते। और उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, जैसे कि मधुमती मैम ने आपसे मुझसे पहले कुछ बातें शेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के बारे में जब मैं बात करती हूँ, मैंने बहुत लोगों से सुना है, दे बी लाइक ओके मैम, मेंटल हेल्थ तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, अडल्टहुड स्टेज के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों स्टेज कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले कि खाली बच्चों को मेंटल हेल्थ की शिक्षा देनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ बाय योर ओन। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी से सीख के कर सकते हैं। ये कुछ चीजें जो आपके साथ अब मैं शेयर करना जा रही हूँ कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है आप उसको कैसे ठीक रख सकते हैं। या जैसा कि जो हम लोगों का टॉपिक है 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर हेल्दी माइंड। सबसे पहली चीज, एज ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, सो थोड़े स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहूंगी, और अगर कोई वर्किंग है या पेरेंट है वो अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड उनकी सिचुएशन कैसी है। सबसे पहली चीज, आप अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी तब रख सकते हैं और एक गुड हैबिट आप तब डेवलप कर सकते हैं जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर देंगे। स्टॉप डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, आप बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए बहुत न्यू टर्म होगी कि प्रोक्रेस्टिनेट क्या है। सो इसको एक अच्छी सी एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ। मम्मा ने बोला होमवर्क कर लो, 5 मिनट मम्मा। मम्मा ने बोला नहीं, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। मैम अभी तो 5 दिन है मम्मा, नहीं करने हैं। अच्छा ओके, मम्मा ने बोला कि ओके अभी जल्दी जल्दी से होमवर्क करो, कल सबमिट करना है। ये एडवर्टीजमेंट यहाँ से निकल जाएगी ना टीवी से, तो मैं बैठ के कर लूंगा, मैं कुछ खा लूं फिर कर लूंगा। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, टाल रहे हो चीजों को दूसरे दिन के लिए या किसी और वक्त के लिए। उससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। जब आपकी हैबिट्स में जो चीजें हैबिट होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट जो चीजें आपका ट्रेट बन जाए, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू चेंज दैट। बहुत टाइम लगता है और बहुत डिफिकल्ट भी है। सो आप क्या कर सकते हैं, वो बोलते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, अ काइंड ऑफ कुछ ऐसा फ्रेज है। सो ये सिचुएशन यहाँ के लिए बहुत सही है। आपको जो करना है टाइम के अकॉर्डिंगली कीजिए। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस डेटोरेट होती है। अब डेटोरेट कैसे होगी किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस? आपको होमवर्क दिया, आपने कल सबमिट करना है, रात तक करते 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 कल किसी फ्रेंड से चीटिंग मार लूंगा तो वैसे करके कराऊंगा। आपका काम पाइल अप हो रहा है, एज अ रिजल्ट आपको स्ट्रेस हो रहा है, बट आपने चीटिंग मार ली, काम खत्म। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट वहां रहा क्योंकि आपको लगा आप तो जीत गए अपनी क्लेवरनेस की वजह से। ठीक है, ये एक चीज है जो आपके माइंड को अंदर से ना बहुत ही खोखला कर देती है। सेम आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आप बहुत इनकॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि यू नो कि अब डिपेंडेंसी आपकी दूसरों पे बढ़ रही है जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, क्योंकि आप अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहे कुछ चीजों के लिए। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर पेरेंट्स। वो उनको लगता है कि बच्चा लटर मस्त है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है, वो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा है? उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो कन्फ्रंट ही नहीं करना चाह रहा अपने फेयर्स को।
बाय फियर आई मीन मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं समझ आती तो मैं नहीं करूंगा। वो अनकॉन्शियसली आपने अपने दिमाग में बिठा दिया है और आप अनकॉन्शियसली प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू हो गए हो। ये एक चीज भी है। सो जितना जल्दी हो सके अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को टालें। जब भी आपको कुछ ना करने का मन करे तो मेरी एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, उसी टाइम वो काम कीजिए। यू नो, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ हैबिट्स के बारे में सुना होगा, 21 डेज लगते हैं। सो आई गेस दिस इज द हाई टाइम फॉर यू गाइज टू मेक अ गुड हैबिट फॉर योरसेल्फ एंड ब्रेक अ गुड हैबिट फॉर योरसेल्फ। तो ये एक चीज बताना चाहूंगी। सेकेंड, प्लान एंड प्रायोरिटाइज। अब यहाँ पे प्लान एंड प्रायोरिटाइज कैसे हम लोगों की मेंटल हेल्थ को, या 10 हेल्दी हैबिट्स में से एक है। जब आप अपना काम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, आप अच्छे से प्लान करते हैं, आप अकॉर्डिंगली पूरा दिन का आपको पता होता है कि मैंने क्या क्या किस टाइम पे करना। प्रायोरिटाइज करना, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट वाली चीजों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप दोनों को जब एक जगह पे रख लेते हो ना, वो टाइम जो होता है अपना खराब करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है अर्जेंट चीज को पहले करना है या इम्पोर्टेंट चीज को पहले करना है। सो आप उस चीज को प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, पुराने जमाने में टेलीफोन के जो बिल भरा करते होते थे तो अब वो बैंक पे जाके भरते थे, तो लोगों को एक दिन पहले याद आता था, ओ कल बिल भरनी है, तो लंबी लंबी लाइन होती थी। अगर वो आपके लिए बहुत अर्जेंट है, आप पहले जाके भर लो। अगर इम्पोर्टेंट है, एक डे डिसाइड कर लो, तब जा लो। आपने इम्पोर्टेंट भी उसी टाइम पे करना है और अर्जेंसी भी आपको सेम टाइम पे दिखानी है, और एट द एंड आप ही को तो इफेक्ट होगा और किसी को नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरह से ये सिचुएशन अपने ऊपर लेके आ सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you need to set your goals and after that you need to celebrate your progress. अब मैंने यहाँ प्रोग्रेस वर्ड क्यों यूज किया, मैं सक्सेस भी तो कर सकती थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 60, 70, 80 ग्रेड्स आते होंगे एंड यू बी लाइक कि मैम 81 भी आ गया तो क्या। नो, इट्स नॉट लाइक। अगर आपका एक टर्म में 80 आता है, दूसरे में 81 आता है, यू नीड टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तब अपने उस चीज को सेलिब्रेट करें। और एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब आप अपने आप को खुद अंदर से अपने आप को देते हैं ना, आपके अंदर उस चीज को करने का जुनून और बढ़ जाता है। सो ये भी आपकी एक मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है और आपका एक अच्छा साइन है आपके अच्छे माइंड का। साथ में बात करूंगी मैं बैलेंस डाइट के बारे में। आजकल के बच्चे बहुत जंक खाते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि आप जंक मत खाओ, पिज्जा, मोमो, फ्रेंच फ्राइज, इवन कि मुझे भी फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं खाऊं। बट दिस इज फॉर यू गाइज। आपकी लर्निंग प्रोसेसिंग बहुत लो हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा जंक खाते हो। अब वो प्रोसेसिंग लो कैसे होगी? हर दिन आप वो खाते हो, कुछ टाइम के बाद आप ठीक रहते हो, फिर बीमार हो जाते हो, आपका स्कूल का टाइम स्किप हो जाता है, वो पीरियड जो आप अपने आप को दे सकते हो तो उससे भी हट जाते हो आप। ओबिसिटी, आप फिजिकली फिट नहीं रहते, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना बैलेंस डाइट रखिए। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे शायद इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अब मैम से पूछते हैं कि बैलेंस डाइट में मैं क्या खाऊं। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता सकती, बट हर एक पर्सन का एक अपना बॉडी टाइप होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपना मील चूज करता है। सो आप अपना मील उस तरीके से चूज कीजिए जो आपकी बॉडी को बेनिफिट करे, ऐसा नहीं जो आपकी फिजिकल हेल्थ को डेटोरेट करे। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो मेरा है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ अपने वेबिनार्स में, कि आप अपनी जिंदगी से अगर अपने 15 मिनट भी निकाल के खुद को एक दिन के लिए देंगे, वो भी बहुत कम है। वो क्यों करना है आपको ऐसा? आपने एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे डोपामिन हम लोगों के दिमाग से रिलीज होते हैं जो हमको एक प्लेजर एक्सपीरियंस करवाते हैं, और आई डोंट थिंक कि प्लेजर के लिए कोई इंसान मना कर पाएगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। जब वो 15 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत फिजिकली फिट रहते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, दिस इज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। एंड जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी है कि आप अपनी जिंदगी से एक दिन में 15 मिनट अपने आप को दीजिए। एक छोटी सी ब्रिस्क वॉक पे चले जाइए। ब्रिस्क वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीटास्कर चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यू वांट टू बी अ मल्टीटास्कर, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं,
आप अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान करते हैं और आपकी कोई भी चीज साथ में जो एसोसिएटेड है वो छूटती नहीं है। आप जब एक चीज के साथ दूसरी चीज करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, आप सबको अधूरा छोड़ देंगे। नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, बट वो एक उनकी इनेट क्वालिटी होती है। बट अगर आप उनको देख के मल्टीटास्कर बन रहे हो, सो आई डोंट थिंक वो आपको सूट करेगा। सो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो मधुमती मैम ने बोला था कि आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न सही होना। जो 10 हेल्दी हैबिट्स ऑफ हेल्दी माइंड है, उनमें से मेरा सबसे प्राइम, हमेशा मैंने इस बारे में बात की अपने इंटरव्यूज, वेबिनार्स, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे बोलते होंगे कि कैसा अच्छा, हम तो रात में देर तक पढ़ते हैं। आप अपना स्केड्यूल इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। और जो 6 से 7 घंटे की नींद आप ले रहे हैं, उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। 10 बजे सोने का मतलब है 10 बजे रोज सोना। 10 से 10:30 नहीं होने चाहिए, 10 से 10:15 नहीं होने चाहिए। जब भी आप सोएं, उसके 30 मिनट्स पहले अपनी टीवी को ऑफ कर दीजिए, अपने फोन को अपने आप से दूर कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो ब्रेन है वो एक रेस्टिंग पोजीशन में जाए। अपने रेस्टिंग पोजीशन के बारे में आपसे क्यों बात कर रही हूँ कि जब हम कुछ क्यूरियस देख के सोचते हैं, हमारा ब्रेन पूरा रात एक्टिवेट रहता है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड है जो मैंने भी बहुत फॉलो किया है, लेकिन जिससे अब मैं अपने आप को थोड़ा दूर रख रही हूँ, वो है वेब सीरीज देखना। जब आप कोई एक वेब सीरीज देखते हो, आपका मन करता है सेकंड एपिसोड को भी देख लो, थर्ड एपिसोड को भी देख लो, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होती। चाहे उसके 14th एपिसोड है या 15 एपिसोड है, आप वो एक दिन में कंप्लीट करते हो। एंड देन यू गेट डार्क सर्कल्स ऑल्सो। एंड सो अगर आप अपना ब्यूटीफुल फेस को ब्यूटीफुल रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकतों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अपने आपको रेस्ट दीजिए। और नींद का मतलब ही, जहां तक मुझे लगता है मधुमती मैम, ये है कि आप अपनी बॉडी को और आपके ब्रेन को रेस्ट दो, जो वो पूरे दिन के चिक चिक से भरा हुआ है। सो जब मैं छोटी होती थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि नींद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, नींद के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। इवन जब संडे होता था तब मुझे नींद ही नहीं आती थी। तब मुझे नींद इस वजह से नहीं आती थी कि सेम मेरा दिमाग बहुत क्यूरियस होता था कि ओके, कल तो वो कुछ, हम लोगों के टाइम पे सोनपरी करके एक डेली सोप आता था, हम लोग वो देखते थे, वो संडे को आता था। तो वो सोनपरी देखना है, तो उस चक्कर में रात को नींद नहीं आती थी और सुबह जल्दी उठ जाते थे, और अगले दिन मंडे को दोबारा से नींद आनी शुरू हो जाते थे, क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहती थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अपने ब्रेन को रेस्ट दें। एक चीज इसके बारे में और बात करना चाहूंगी, वो है आपको हर समय ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल बनाएंगे वो रनिंग शेड्यूल ही होगा, कि आप एक के बाद एक चीजें कर रहे हैं। थोड़ी सी ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, आपके सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, तो वो सैटरडे संडे सच में सैटरडे संडे की तरह ही बिताने चाहिए आपको। उसमें इतना वर्कहॉलिक होने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे मीन सैटरडे संडे। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटीज में होती थी, हम लोगों की एचओडी होती थी शुभदीप मैम, वो हम लोगों को हमेशा एक चीज बोलती थी कि मनप्रीत, संडे टाइम इज अ मूवी टाइम, जो करना है संडे को करो, मंडे दोबारा से आप अपनी पोजीशन में आ जाओ जहां पे आप अपना काम रूटीन अकॉर्डिंगली शेड्यूल को फॉलो करेंगे। सो वो एक इतनी अच्छी चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि उसकी वजह से शायद स्ट्रेस नहीं होता कि अगले दिन क्या करना है। अभी आपके पास संडे, उसको संडे की तरह एंजॉय कीजिए। एंड लास्ट में इस चीज के साथ एंड करना चाहूंगी, जो मेरा टॉप मोस्ट हमेशा रहता है, कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक्चुअली पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, सो आई डोंट थिंक कि आपकी मेंटल हेल्थ कभी भी इफेक्टेड होगी। अपने आप से बात करना, लोग बोलते हैं पागल होते हैं वो लोग जो अपने आप से बातें करते हैं। हाँ, शायद होते होंगे, पर अगर अपने आप से अगर आप बात पॉजिटिव कर रहे हो, तो आप पागल नहीं हो, बहुत समझदार इंसान। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होना, खुद को बताओ कि उसके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं। हम एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जब किसी क्लाइंट को काउंसल करते हैं, हम उसको एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव काउंसलिंग लेते हैं। नो मैटर कि उसकी लाइफ में सिचुएशन कैसी है, उसको पॉजिटिवली गाइड करते हैं। बट वही कहीं जब हम अकेले होते हैं, जब कोई इंसान अकेला होता है, वो खुद को दूसरों को देख देख के क्रिप करता है, एंड ही बी लाइक, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मुझसे ऐसा हो नहीं सकता। वो खुद को नेगेटिव काउंसल कर रहा होता है। और नेगेटिव काउंसलिंग का असर बहुत बुरा होता है, स्पेशली जब नेगेटिव काउंसलिंग नेगेटिव सेल्फ काउंसलिंग बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। आप अच्छी बातें करेंगे और आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने साथ।
और जब आप अपने साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे और दूसरों के साथ भी खुश रह पाएंगे. सो आप अपने एकेडमिक्स में भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो और अपनी डे टू डे लाइफ को भी फॉलो कर सकते हो. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, मैम. You rightly said, ma'am, that yeah, great summing up. these Yes, students Renu. are very. So, ma'am, we have some questions from our students and from our audience who joined us from Vegas. So, first question is for you, Manpreet, ma'am. As you talk about exercise, so one of the students, Hanshika Gupta, wants to know that how many minutes of exercise we need each day. Like how much of the time we need to spend on exercise in one day. But so is this from the Ishita? Oh, this question is from Hanshika Gupta. ओके, सो हंसिका बच्चे, इस चीज को मैं किस तरीके से आंसर करूं. हर एक इंसान का अपने बॉडी का एक पैटर्न होता है. आप जब एक्सरसाइज करने के लिए जिम में भी जाते हैं, आपको अकॉर्डिंगली जो जिम ट्रेनर होते हैं, आपको आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं. बट जो बेसिक मिनट्स आपको फॉलो करने चाहिए वो 15 to 20 मिनट्स तो मैक्स होने चाहिए. उसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग रोप के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं. बट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है वो ब्रिस्क वॉकिंग है, क्योंकि आप टहलते भी हैं और बहुत सारी चीजों से आप बाहर आ जाते हैं. जब आप वॉक पे जाते हैं, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है. जो पूरा दिन आप किसी और से कुछ पूछना चाहते हैं, वो पूरा दिन जब आप वो चल के 15 मिनट का वॉक करते हैं ना, आप खुद को जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे आंसर्स आपके पास खुद होते हैं. सो आप मेंटली बहुत फिट होते हो उससे. So, yes, ma'am. So, Madhumati ma'am, we have a next question for you from Yashvi Bansal. She wants to know that in this pandemic, our habits go very unbalanced. So, how we can make our habits balance again? See, pandemic or not pandemic, the point is that जब कोविड नहीं दिखा तब भी जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं वो डिसिप्लिन रहते हैं, और कोविड है तो वो तब भी डिसिप्लिन रहते हैं. तो the rule is the same. The rule applies the same, which means the 24 hours given to you, divide them into 3 parts. 8, 8, 8. 8 hours of sleep, 8 hours of study, academics, work, 8 hours. कैसे करें आप 2 घंटा जैसे आपको मन करे, होमवर्क आप क्लासेस हैं. 8 hours, 8 hours of sleep, 8 hours of study, work, 8 hours of leisure, co-curricular, sports, learning a skill. That's how it is. जितना आप उसको 8, 8, 8 करके करेंगे, you'll be able to put in everything. Yes, any other question? Yes, ma'am. There is one question from Ishita. She wants to know from Manpreet ma'am that she said that we should be free on Sunday. We should be stress-free. But as we are in school, our teacher wants us to do our homework and projects and practicals on Sunday itself. Yes. Actually, बहुत सही So बात we है. have a lot of stressors from our environment only. How can we be stress-free then? From Ishita. So Okay. basically, she is saying that our teachers give us work on Sundays also. So how can we be stress-free? सो एक्चुअली अभी का जो रूल है दैट इज कि सैटरडे संडे स्टूडेंट्स का ऑफ रहता है मैक्सिमम टाइम पे. सो आप अपने जो क्लासरूम एक्टिविटीज जो आप लोगों ने करनी होती है मैक्सिमम टाइम पे टीचर्स तब आपको संडे को करने के लिए देते हैं जब आप लोगों की सबमिशंस टाइम पे नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स ने भी अपना एक कैरिकुलम अपने हिसाब से सेट करा होता है. बट जैसे कि क्वेश्चन आपका है कि आप किस तरीके से टाइम निकाल पाएंगे, यू नीड टू बी वोकल अबाउट दैट. आप अपने टीचर के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने टोन अच्छे से रख सकते हैं, उनके साथ बात करके उनको बता सकते हैं कि अगर आपका एक दिन है संडे जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से जाना चाहिए, आप मैम के साथ बात कर सकते हैं. सो हमेशा मैंने ये चीज कहा है, जो चीजें आपको सही लगती हैं उसके बारे में वोकल होना इज नॉट अ बैड थिंग. बट यस, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वर्क दिया जाता है संडेज को, एंड आई गेस मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्क दिया होता है. वो रीजन उसका सबसे बेसिक यही होता है
कि आप लोग अपना जो टाइम है उस तरीके से स्पेंड नहीं करते जिस तरीके से करना चाहते हैं। आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं रीजंस की वजह से, एज अ मार्क ऑफ पनिशमेंट ही आप समझ लीजिए आपको संडे को दिया जाता है। बट जहां तक मुझे लगता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आप अपने टीचर के साथ बात कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली उनको बता सकते हैं कि अगर आपका एक दिन है, आपको वो फ्री रहना है, सो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाकी पास दिस क्वेश्चन टू मधुमति मैम ऑल्सो, सो दैट कि वो एक Good point. अच्छा Manpreet ने आपने अच्छा एक point bring up किया, and since we are also running out of time, if we have any other question, but the quick take on this, along with what Manpreet said, is the important part is that most probably most teachers are aware कि उनको ज़्यादा unnecessarily, untoward, unacceptable काम assignment बच्चों को नहीं देते हैं। इतना तो experiences teachers को होता है। They are not sadists. They are not here to create problems for the children. The second part, the more important part is that it is always exactly what Manpreet said, procrastinate. हम क्या करते हैं, last minute पे छोड़ते हैं चीजें। आप स्कूल से आते ही अपने काम कंप्लीट कर लो ना, पहले संडे मौज करो, वो तो करो। What we do is, अरे अभी तो फ्राइडे हुआ है, अभी तो सैटरडे आधा दिन है, अभी तो कर लेंगे। So finish your work. My one request to all of you is, the moment an assignment is given to you, आपको जैसे मिला ना, don't say कि अच्छा अभी तो मिल गया तो मैं खेल आऊं, ये करो, पहले उसको कंप्लीट कर लो। It will take you half an hour, it will take you 45 minutes. You shut your book, you shut your laptop, and you're free. Yes, Renu, any other question? Yes, ma'am. Actually, I can see Vaibhav is very excited to ask. So I want to unmute him. Vaibhav, Yes, Vaibhav. Vaibhav Datta. Yes, Vaibhav, Your बोलिए। voice is not coming, Vaibhav. Please type in the chat box so I can read the question for you. As Vaibhav is writing, ma'am, we have another question from our students for both of you, as you guys are child psychologists. So they want to know that what are the most beautiful things you have faced as being a child psychologist? Beautiful. What did you say? What is the word? beautiful thing. So, ma'am, so beautiful things you face in your profession, like you both are child psychologists. So, what is the most beautiful part Some of of the your beautiful profession? part of being a child psychologist, first thing is a child is resilient. उनमें एक inherent capacity होती है bounce back करने की, वो therapeutically ही therapist के लिए भी बहुत encouraging होता है, पहला point. The second point is, in the process of therapy, we also relive our own childhood, and we are able to direct the kid to be more realistic with their future, to be more productive with their future. And third thing, of course, is, the generation gap. Talking to a child, they will always end up teaching you more than what you know. They are so forward, they are so aware with so much in terms of technology, in terms of what's happening these days, music, the movies, the kind of stuff. So it's always fun to be with kids. Manpreet. सेम मैम, सेम। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर पाऊंगी, बट ये जरूर कहूंगी कि मेरा सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ ये रहता है कि वो तर्क बड़ा अलग तरीके का देते हैं, ऐसे अडल्ट लोग नहीं देते। आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, स्कूल में भी आई एम अ स्कूल काउंसलर। जब मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ और उनको जब मैं कोई चीजों के बारे में बता रही होती हूँ, वो इस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मुझे भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और उनकी थिंकिंग का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, और वो पैटर्न नेगेटिव नहीं होता, वो पैटर्न बहुत पॉजिटिव होता है, उनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है। सो ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे उनसे मिला है कि जो आपको बात किसी के लिए रखनी है, आप रख लो। आप ये मत सोचो कि बोलने के बाद आपने क्या बोल दिया, बट एटलीस्ट आप बोल दो, सो दैट कि वो चीज आपके मन में ना रहे, वो क्यूरोसिटी वाले क्वेश्चंस। मधुमति मैम ने स्टार्टिंग में एक चीज कही थी जिससे मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, कि हम पेरेंट्स बच्चों को नॉर्मल तौर पे उनकी क्यूरोसिटी को डाउन कर देते हैं, और उससे वो उनके अंदर जो वो इंटेलिजेंस होती है वो भी रुक जाती है, चीजों को जानने की क्षमताएं रुक जाती है। सो वो एक चीज है, क्यूरियस नेचर बच्चों का, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। हम अडल्ट लोगों में क्यूरोसिटी किसी चीज को लेके रही नहीं है, हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ हो गया है। सो एज अ रिजल्ट हम लोग लगता है कि हमें बॉर्डम फील हो रहा है। वो बॉर्डम इसी वजह से तो फील हो रहा है क्योंकि हमें लगता है हमने सब कुछ कर लिया। जैसे लॉकडाउन में सारे बोल रहे थे हम बोर हो रहे हैं, और जो बोर नहीं भी हो रहे थे वो लोगों का सुन सुन के बोर हो रहे थे। तो ये एक एक्वायर्ड स्ट्रेस तब चल रहा था। सो यस मैम। Yes, Renu. Last question, please.
So yes, Renuka? ma'am. For today's session, we have the last question for Manpreet, ma'am. One of the students wants to know, as our habit of studying are disturbed due to COVID, as we are now totally depend on mobile phone. Mhm. So how we can maintain this time, like how we can maintain our studies Mhm. in the COVID time? कोविड टाइम में मुझे जहां तक मुझे लगता है कि किसी के स्टडी पैटर्न में चेंजेस होना नहीं चाहिए थे। उसका रीजन ये है, आप लोगों ने अपनी स्टडी टाइमिंग्स में, अपने पैटर्न्स में चेंज खुद लेके आए हो। नॉर्मली अगर आप स्कूल्स की बात करें तो स्कूल उस तरीके से ही रन हो रहे थे, ऑफलाइन भी टाइमिंग वही ही थी जो ऑन। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, आपको आप घर पे हैं और आपने अपने पैटर्न्स चेंज कर दिए। पेरेंट्स ने भी पैटर्न चेंज कर दिए, जो कंप्लेन कर रहे थे टाइम पे पढ़ नहीं रहे। अगर आपका मॉर्निंग शेड्यूल था कि आप अपने बच्चे को 9 बजे स्कूल भेजते हो, 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेते हो, अब आपने उसको चेंज करके 9 कर दिया। बच्चे ने भी 9 करने के बजाय उसको 10 में शिफ्ट कर दिया। अकॉर्डिंगली उसने अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया। ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा, यू नीड टू स्टिक विद योर शेड्यूल। आप अपने लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। अगर आपने 10 बजे पढ़ना है, आप हर दिन 10 बजे ही पढ़ेंगे, आप 10 से 10:30 नहीं करेंगे। आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, और अगर आप गेम्स भी खेल रहे हैं, आप उस तरीके से ही आप चल सकते हैं। आधा घंटा इनफ है मोबाइल पे गेमिंग के लिए। तो आजकल आप जैसे बच्चे बहुत सारे इन्वॉल्व हैं मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर गेम्स में, जिस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आपका शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो गेम्स ले रहे हैं। वो एक बहुत मेजर रीजन है जहाँ पे आपका स्टडी पैटर्न पे असर पड़ रहा है। आप अपना शेड्यूल उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से स्कूल में था, जैसे आप पढ़ने के लिए जाते थे। सो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस होगी। Great. Yes, ma'am. I think we've summed it up. Manpreet has summed it up beautifully well. So, Vaibhav, I hope that answers your question. Of course, before we all say goodbye for the time being, I would like to bring to your notice, all you viewers out there, very important to get onto the Fairgaze website. Not only the website, we also have a Fairgaze app. So please download the app. You are going to become richer with so much of resource, out of which the most important one is you can book your online consultation. You can have counseling, one-on-one session. Just click on book your appointment now. That is very, very important, and you will be able to talk to one-on-one with all our counselors. Get rid of your queries. Don't keep questions in yourself. Download the app, which is there. It is a very, very enlightening and a very enriching experience. So with that, over to you, Renu, to sum it up. I just want to add here that thank you so much, Manpreet ma'am and Madhumati ma'am, for giving your time today for us and for our students. And I'm very thankful to Manpreet ma'am for joining us today. And I want to bring this in your notice that the principal Rohini is also here in our session from Jammu Sanskriti School. So thank you, ma'am, for joining us today. And again, I want to say that thank you so much, Madhumati ma'am and Manpreet ma'am, for this wonderful session. I'm working, but I also want to say that whenever we have a session, I get so many of knowledge that I use in my life. In today's session, I'm very amazed at how you both explained the things very well. Every student in the session gained so much of knowledge, and I'm sure that these things and the steps that you bring to our notice, everyone will use them in their life. And I also want to add one thing. Students, you can register for more such sessions that we have in every week. And we have also an upcoming session, which is tomorrow, DIY decor session on the Sarah. It will be going to be an amazing session. So all you have to do is you can visit our site www.fairgaze.com and you can register for the webinars. Again, thank you, ma'am. Thank you, Madhumati ma'am. Thank you, Manpreet Best of ma'am. luck, all of you. Thank you, ma'am. Looking forward for having more sessions with both of you. Thank you. Have a Take lovely care. evening, Take everyone. care. You too. Enjoy. And happy Navratri, everyone. Same to you. Wish you the same, ma'am. Goodbye.